A very good morning. It's just past 8, the 6th August morning, and we're back again with Breakfast Show. I'm Anil Thomas. Over the next 1 hour, we'll take you through the major happenings across India and the globe from the field of politics, business and sports. Also our regular segments on health and Good News India story. Our top focus over the day, historic resolution to revoke the special status of Jammu and Kashmir and the bill for reorganization of the state to be introduced in Lok Sabha today. Also, the apex court to start the daily hearing in the Ayodhya dispute, and the Indian team looking for a clean sweep in the final T20 game against the West Indies. We'll be getting live inputs from our correspondents on various angles to the top stories. But first up this Tuesday morning, the headlines we're tracking at the top of this hour. Lok Sabha to take up the historic resolution to end the special status of Jammu and Kashmir and the bill to reorganize the state. Rajya Sabha had already passed the legislations yesterday. Home Minister Amit Shah assures that full statehood of the bifurcated state of Jammu and Kashmir will be restored as soon as the situation normalizes. Prime Minister Narendra Modi praises Amit Shah for his speech in Rajya Sabha. Government's historic initiative for Jammu and Kashmir gets the backing of several opposition parties. BSP, BJD, YSR, CP, AAP, AIIMS all come out in support. Cracks within the Congress party clearly seen. Its chief whip in the Rajya Sabha, Bhubaneswar Kalita, quits. Supreme Court to start the daily hearing in the Ayodhya dispute from today. Efforts to resolve the issue through mediation failed, after which the Supreme Court decided to hear the matter on a daily basis. Unnao Rape survivor shifted to New Delhi's AIIMS. The survivor was critically injured in a road accident last week. Six people killed, 10 people injured as fire breaks out in a building in Delhi's Zakir Nagar late last night. Several residents have been rescued by the fire service officials. In international news, US-China economic war escalates further. US Treasury Department officially labels China as a currency manipulator. Chinese currency yuan sinks to its lowest value in a decade. And in cricket, Australia beat England by 251 runs in the first test in Edgbaston. Steve Smith, making a test comeback after a one-year ban, declared the man of the match for his back-to-back hundreds. Well, now for the stories in detail. Lok Sabha will today take up the historic bill to end the special status of Jammu and Kashmir and make way for its reorganization. Union Home Minister Amit Shah tabled the bill in the lower house on Monday. The Home Minister will move for consideration and passing the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 to provide for the reorganization of the existing state of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha. The Home Minister will also move the Jammu and Kashmir Reservation Second Amendment Bill 2019, which will be taken in for consideration and passing. The bill seeks to extend the 10% EWS reservation to the state of Jammu and Kashmir. The government has announced the repealing of the Article 370, which grants special status to Jammu and Kashmir. The resolution in this regard were adopted by the Rajya Sabha on Monday. The upper house also approved the bifurcation of Jammu and Kashmir into two union territories of J&K and Ladakh, with 125 votes in favor as compared to 61 against it. The reorganization bill provides for formation of a union territory of Ladakh without legislature and a separate one for Jammu and Kashmir with legislature. It's a historic day for India. The Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 was passed by Rajya Sabha. The valley will be bifurcated into two separate union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The bill was introduced amid uproar by opposition in Rajya Sabha.
First, Home Minister Amit Shah moved a resolution in the House to abolish Article 370 after the President issued a notification. And then he moved the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019. He said the Union Territory in Ladakh will have no legislature. Just after this announcement by Home Minister, the House witnessed strong protest from the opposition, with leaders raising slogans and storming the well of the House. But some parties extended full support to the resolution and the bill. The Reorganization Bill provides formation of Union Territory of Ladakh without legislature and a separate one for Jammu and Kashmir with legislature. The Home Minister informed the House that President Rama Chandra has signed the official notification abrogating Article 370. And since the Jammu and Kashmir Constituent Assembly no longer exists and the State Assembly stands dissolved, the powers of the Assembly rest with both Houses of Parliament. A copy of President's order was also distributed in the House. राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। Home Minister also moved the bill to extend reservation for economically weaker section in educational institution and government jobs in Jammu and Kashmir. The reservation will be besides existing reservation for SC, ST and OBC. With Parliament team, DD News. In a reply to the debate in the upper house, Union Home Minister Amit Shah said that when the winds of development are flowing in the whole country, the state was untouched by the development due to Article 370. Amit Shah said that with the withdrawal of Article 370, Jammu and Kashmir will become an integral part of India. हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। शेड्यूल बता दो, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए। The Home Minister said that Congress misguided the country for a long time on Article 370. और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, कुछ नहीं होने वाला। ये बरकरार रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं। Prime Minister Narendra Modi has praised Home Minister Amit Shah's speech in Rajya Sabha on Jammu and Kashmir. In a tweet, the Prime Minister said the Home Minister accurately highlighted the monumental injustice of the past and coherently presented the government's vision for the people of Jammu and Kashmir. Sharing the Home Minister's speech on his Twitter handle, Prime Minister Modi said the views put forth by Amit Shah were extensive and insightful. Well, for more on that story from Parliament, joining us this morning is our correspondent tracking the Parliament for us, Rishi Kumar, this morning. Rishi, good morning. Rishi, this thing, is there now, is there a value of hope that we are looking at, purely with the bill getting passed in the upper house? Is that, does that open a Pandora's box, and is that a value of hope that we are looking at? हाँ बिल्कुल अनिल, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए
एक नई उम्मीद के रूप में इसे हम देख सकते हैं। और गृह मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि हमें 5 साल का वक्त दीजिए, देश ने एक लंबा समय अनुच्छेद 370 के साथ देखा है, अब उसके बिना भी अगर देखें और उसका समाधान अगर लगता है, दिखाई देता है, तो सबसे बड़ी सफलता होगी। गृह मंत्री ने जिस तरीके से अपने अभिभाषण में बोला कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बिल्कुल आगे जो भी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन जब सरकार ने फैसला कर लिया है कि 370 और जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर है, जिसके जरिए अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के आगे जो प्रावधान है, प्रोसेस है, उसको वो बढ़ाएंगे। और जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, गृह मंत्री ने बार बार जिस तरीके से सदन में इस बात को रेखांकित किया कि 370 की वजह से क्या नहीं हुआ, ये जो फैक्ट्स उन्होंने रखे वो इस बात का संकेत देते थे कि सरकार इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि इस प्रोसेस में अब उन्हें क्या आगे करना है। डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ साथ जो पीस प्रोसेस है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने सदन में ये भी कहा कि जो अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप था कि यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, तो उन्होंने इस पर भी स्पष्ट किया कि सरकार जब माहौल वहां पर अनुकूल होगा तो एक बार फिर से वहां पर उसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो साफगोई है, जो स्पष्टता है सरकार के सामने, कल वो राज्यसभा में दिखाई दी। और इसी वजह से मुझे लगता है अनिल, जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो आमतौर पर सरकार के विरोध में रहते थे, वो भी कल समर्थन में नजर आए। और आज अगर हम देखें लोकसभा में जब ये बिल आएगा और जो आर्टिकल 370 के से संबंधित जो रिजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि इस सरकार की होगी जब दोनों ही सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति भी इस पर मोहर लगाएंगे। तो इस तरीके से तो आपने वर्ड यूज किया कि बिल्कुल एक पेंडोरा ओपन करने वाली बात है, क्योंकि सभी लोग आर्टिकल 370 से, खासतौर से सियासी दल, इस बात से दूर रहते थे और उन्हें लगता था कि इसको अगर हम छूते हैं तो शायद उनको कोई पॉलिटिकल नुकसान हो। लेकिन ये पॉलिटिकल विल है और कमिटमेंट है और कॉन्फिडेंस है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कैसे उसे देश की मुख्य धारा और विकास की जो धारा है उससे जोड़ पाएंगे। ये सब जो बातें हैं ये कॉन्फिडेंस को शो करती हैं, और कोई भी सरकार जब अपने क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ती है उसी का परिणाम ऐसा होता है कि वो बड़े फैसले करने में सफल हो पाते हैं। Okay, Rishi, what does this, what's the difference that this repeal brings, to the people of Jammu and Kashmir? Hello, Rishi, good morning. Rishi, what is the difference that this, particular, revoking of the Article 370 that brings to the people of J&K? देखिए, जहां तक आर्टिकल 370 के रिवोक करने से संबंधित जो रिजोल्यूशन था, बिल्कुल, उसमें सरकार ने इसके सिर्फ एक क्लॉज को रखा है, जिसमें कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से वहां पर केंद्र सरकार के आदेशों को लागू करने संबंधित जो आदेश है आर्टिकल 370 का, वो बरकरार रहेगा। लेकिन बाकी के जो कि जम्मू कश्मीर को जो एक तरीके से अलग सेपरेट करते थे और उसको विशेष दर्जे के रूप में रखते थे, जिसमें कि तमाम प्रावधान ऐसे थे जिसमें कि राज्य के साथ अन्य देश के जो राज्य हैं उनके साथ और जम्मू कश्मीर में काफी अंतर था। इस वजह से जो चाहे जैसे वहां जमीन खरीदने से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर जो तमाम चीजें हैं वो सब उस पर बंदिशें होती थी, वो ऐसा संभव नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि जो राज्य के लोग, अगर हम आर्टिकल 35A की अगर हम बात करें, धारा 35A की, उसमें भी ये प्रावधान जिस तरीके से कि जम्मू कश्मीर की जो बेटियां हैं वो अगर बाहर शादी करती हैं तो उनके जम्मू कश्मीर में अधिकार समाप्त होते हैं। तो ये ऐसे तमाम प्रावधान थे जिसके जरिए वहां पर जो जिसे हम कहते हैं कि जो मुख्य धारा से जुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें व्यवधान पड़ता था। और अगर हम बात करें कि जो इस पूरे प्रोसेस में कल जो बिल सरकार ने रखा है उसमें दो बिल रखे थे, जिसमें कि एक रिजर्वेशन से संबंधित और दूसरा जो बिल था जिसमें कि उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के दो यूनियन टेरिटरी में। तो जो दूसरा बिल रिजर्वेशन का है, कल गृह मंत्री ने स्पष्ट किया था राज्यसभा में कि अगर परिस्थिति वहां लोकसभा में ऐसी बनती है कि पहले बिल जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन का बनता है तो
दूसरे बिल को रखने की जरूरत नहीं होगी और आर्टिकल 370 जैसे ही विड्रॉ होता है और उसको सदन पारित करता है तो जो संविधान, भारत के संविधान के सभी प्रावधान आज रात, अगर आज ऐसा होता है तो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो रिजर्वेशन वाला बिल है वो संभवतः शायद मूव न किया जाए, और अगर होता भी है तो उसके पारित होने या न होने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर सभी राज्यों के समान जब लागू हो जाएंगे तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वो वहां पर सभी प्रावधान लागू होते ही रिजर्वेशन का प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। Okay, one final word before I let you go. The clearly Fisher seems to be in the opposition camp. The way in which the chief whip of the Congress, Bhuvneshwar Kalita, there, resigning from the upper house, clearly indicating that the opposition was caught off guard on this particular front. बिल्कुल अनिल, देखिए जहां तक किसी भी चीज के लंबे समय तक चलने के बाद जब उसका पक्ष विपक्ष तैयार होता है तो एक माहौल ये भी बनता है कि क्या उसकी वास्तविकता है और क्या उसकी जरूरत है। Okay. दोनों चीजों पर जो जब असेसमेंट होता है उसके आधार पर जब फैसले होते हैं तो इसी तरीके से उसको प्रतिबिंबित होते हुए हम देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से अंदर ही अंदर अगर मैं बात करूं, तमाम जो सांसद हैं वो इस बात से संतुष्ट भी थे कि चलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कि समाप्त होना चाहिए था, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी बोला था कि आर्टिकल 370 जो है वो धीरे धीरे घिस जाएगा, यानी कि एक संकेत था कि ये धीरे धीरे समाप्त होगा। और गृह मंत्री ने कल कहा भी कि आपने 370 में जिस तरीके से छोटे छोटे प्रावधानों को बदलते हुए 370 को कमजोर किया या उसको हटाने का जो प्रयास किया, हम उसको एक तरफा कर रहे हैं और उसको पूर्णतः समाप्त कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस में जो सरकार की जो कन्विंसिंग पावर थी इस बिल को लेकर, आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन दिखाई दी। और उसी का प्रतिफल, जैसे कि आपने जिक्र किया, उनके चीफ व्हिप कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुजन समाज पार्टी, हालांकि उनकी पहले से ही इस बात पर सहमति थी और उनका पार्टी लाइन थी कि वो ऐसा चाहते थे। इसके अलावा जो तमाम राजनीतिक दल हैं, और अगर मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आज लोकसभा में अगर हम बात करें तो कल जो राज्यसभा में सरकार को बहुमत मिला था, मुझे लगता है वो उससे और ज्यादा बहुमत मिलेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इतने वक्त में देश में जो माहौल और जो रिएक्शंस आए हैं वो राजनीतिक दलों को कई बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो जन आकांक्षाएं हैं उनको अब कैसे संभालना है। और जिस तरीके से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए सपोर्ट किया, जबकि उनकी पार्टी ने राज्यसभा में विरोध किया। अब ये जो परिस्थितियां बनती हैं जो जन आकांक्षाओं के विरुद्ध, वो राजनीतिक दलों के ऊपर कई बार भारी पड़ती है और उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। Okay, we'll leave it there. Thank you and appreciate you joining us. But the Home Minister clearly sending or hinting that the possible rollback on the Jammu and Kashmir statehood can only happen at the right time. As of now, it becomes 2 union territories. Let's stick with that story. The government's historic initiative for Jammu and Kashmir got the backing of several opposition parties, including the BSP, the Samajwadi Party, the BJD, YSRCP, the AAP, AIIMS. They all came out in support to end Article 370. हमने कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हमने कुछ कारण बताना चाहते हैं। इस देश में खाली जम्मू और कश्मीर जो है वहीं पर सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रहती है। मुस्लिम कम्युनिटी जितनी जम्मू कश्मीर में रहती है उससे कहीं ज्यादा तादाद में बाकी पूरे देश में रहती है, लेकिन उनका हक कि वो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, वहां पर के बाशिंदे बने, वो हक उनका अभी तक छिना हुआ था। लेकिन इसके आने के बाद इस देश के जितने भी माइनॉरिटीज के लोग होंगे, दलित होंगे, बैकवर्ड होंगे, जो देश के और कोनों में रहते हैं, जो ज्यादा संख्या में है, खास तौर से माइनॉरिटी मुस्लिम्स, उनका अब एक राइट मिल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर में जा करके वहां पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वहां के बाशिंदे कहलाएंगे। और इस वजह से हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया था, हमारी पार्टी की मुखिया बहन माती निर्णय लिया कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। ये कहा It is a great privilege and honor to speak on this very important bill subject.
which has been pinching this country for the last many years. And we hats off to the Home Minister, Honorable Home Minister and the Prime Minister for their vision. And this will completely solve the problem of Kashmir. Sir, the courageous and bold and daring step of the Honorable Home Minister will be remembered in the Indian parliamentary history forever, sir. ये एक तरफ जो है वो इंसानियत की जीत है, कश्मीरियत की जीत है और कश्मीर को जिस तरह से 370 के नाम पर कुछ गिने चुने राजनीतिक परिवारों ने ठगने का काम 70 सालों तक किया है, उस ठगी को पूरी तरह से खत्म किया गया है और कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत ही शानदार क्षण है ये। और निश्चित तौर से ये कश्मीर और कश्मीर के लोगों को तरक्की के रास्ते पे ले जाने में मजबूत एक कदम है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसके हिसाब से ये एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आज़ादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य है। आज राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं समझता हूं कि व्यापक रूप से पूरे देश को ये अच्छा लगा होगा। कश्मीर इशू ये उलझा हुआ है 70 साल से, तो मुझे लगता है हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अविच्छेद्य अंग है। आज सही अर्थ में कश्मीर भारत का अविच्छेद्य अंग बना। राष्ट्र की सुरक्षा की सवाल उठता है, भारतवर्ष की सम्मान की सवाल उठता है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। देश इंडिपेंडेंट जब हुआ, जब देश खुश था, वैसे पूरा भारत देश आज खुश है और सचमुच क्रांतिकारक निर्णय मोदी साहब का और अमित शाह का। आज से सचमुच कश्मीर वाले लोग आज सुकून से और आनंद से सोएंगे। Former MP from Ladakh constituency Tupsen Chwang has hailed the union government's decision on Jammu and Kashmir, describing it as a historic decision for the people of Ladakh. आज राज्यसभा में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसले का जो घोषणा किया उन्होंने, उसको लेकर लद्दाख के लोग मरकजी सरकार को, विशेष तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रियासती हुक्मरान गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, सबको हम दिली मुबारकबाद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा था और बहुत ही कठिन फैसला था। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश है ही है। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में है, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में ये फैसला बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। People across the nation hailed the decision of the government of India to withdraw the special status from Jammu and Kashmir. From north to down south, east to west, people rejoice a new era after Rajya Sabha voted to end the special status of Jammu and Kashmir. People danced to drum beats and distributed sweets as they hailed the centre's move as a bold, historic and monumental decision towards the delivery of justice to the region. In Jammu's Udhampur, Kashmiri migrants hailed the government's decision and said they were confident that development and employment would get a big boost in the valley. These celebrations were not only restricted to Jammu and Kashmir, but from Leh to Bengaluru to Varanasi to Bhopal to Ludhiana and Ahmedabad. The entire nation hailed the decision and celebrated the big move by the Modi government. In other parts of the country, people hailed this historic decision. India celebrate Modi government's decision on Jammu and Kashmir in a big way, and these are visuals from various parts of the country with regards to celebrations. Meanwhile, Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik has reviewed the security situation and emphasized the need for constant alertness and preparedness to deal with any eventuality after the centre scrapped Article 370 of the Constitution, which accorded special status to the state. According to a Raj Bhavan spokesperson, the government held a meeting with top officials last night and reviewed the prevailing security and the law and order scenario in the state. The governor stressed the need for ensuring safety of general public and advised the administration to give due consideration to the genuine needs of people in the current scenario.
National Security Advisor Ajit Doval is in Jammu and Kashmir to review the prevailing situation in the state in the aftermath of the revocation of the special status to the state. Well, for more inputs, Neha Jalali joins us from Jammu this morning. Neha, good morning. Neha, is it a valley of... well, we got Ashwini there joining, Ashwini Mishra, correspondent, joining us from Jammu this morning. Ashwini, what are the people there on the street there, on ground zero? How are they celebrating this particular change or winds of change or a new dawn that we see in Jammu and Kashmir? निश्चित तौर से जो आप न्यू डॉन कह रहे हैं, निश्चित तरीके से एक नया सूर्योदय है, नई सुबह है और नई सुबह नई उम्मीदों के साथ आई और ऐसी उम्मीद जिसका सामान्यतया जम्मू कश्मीर के विस्थापित और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लंबे समय से लोग जिसकी उम्मीद भी नहीं करते थे कि 370 कभी खत्म होगा, वो सपना साकार हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हम जम्मू में हैं। आप ये बताएं कितना ऐतिहासिक, कितना युगांतकारी ये कदम मान के चलते हैं? ये बहुत साहसिक फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, आपको उम्मीद थी जिस तरीके के अब तक की सरकारें थी कि 370 कभी खत्म होगा, या फिर जो कश्मीर से विस्थापित पंडित हैं उनका भी लंबे समय से मांग थी, किस रूप में ये देखते हैं कि कश्मीर के अपने विकास के, जम्मू कश्मीर के विकास के, तीनों रीजन के विकास के लिए कितना अहम होगा? ये बहुत ही साहसिक फैसला है और सबसे बड़ी बात थी कि एक तरह से जो प्रदेश जो था वो बंधक बना हुआ था, तो ये बंधन से मुक्ति का है। आज का सही मायनों में आज ये मुक्ति दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि और सही मायने में ये देश के साथ मिला। जो यहाँ के आम जन थे, यहाँ के लोग थे, कुछ परिवारों, कुछ लोगों को लेकर के उन्हीं को सारा बेनिफिट, सारा सुविधा मिलती थी, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। यहाँ के आम आदमी के, आम जनमानस के लिए एक बहुत ही साहसिक और बहुत ही युगांतरकारी ये फैसला है और यहाँ के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो विकास की चीज़ थी, नौकरी की थी, रोजगार का था, वो बिल्कुल बना पड़ा हुआ था। यहाँ पे अगर आज से 5, 7, 10 साल पहले की बात की जाए तो नॉर्मली लोग 8वीं 10वीं करने के बाद में 70% बच्चे जो है वो इधर उधर जाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा। आने वाले टाइम में इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा, आने वाले टाइम में यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यहाँ पर माहौल अच्छा होगा और सबसे बड़ी और ये था कि जो सरकार का मिलिटेंसी के ऊपर इतना बड़ा खर्च था, ये ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाएगा, बट कम से कम 1-2 साल के बाद में ये चीज़ें खत्म होंगी। फौज जो यहाँ पे इतनी लगी हुई थी वो भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा तो चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? शांत माहौल। जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी खुद आ जाएगी। सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ये बहुत ही साहसिक फैसला लेने के लिए हम उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। दिल से इस चीज़ की है। जम्मू के किसी भी बच्चे से, किसी भी लोग से पूछो तो आज तक वो 370 को हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो कि हमें कोई स्पेशल है, बट आज तक उनको स्पेशल तो कुछ हुआ नहीं है। वो उतने ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। नौकरियाँ होती थी, कोई भी व्यवस्था होती थी, विकास होता था, उसमें कश्मीर का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। इनकी कोई पूछ पड़ताल नहीं थी। युवा किस रूप में देख रहा है इस ऐतिहासिक फैसले को? युवा तो बहुत खुश है जी। युवा 370-35 जो हट गया, इससे युवा बहुत खुश है। पूरा जम्मू वाले खुश हैं। जम्मू वालों के लिए तो ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है और जितने भी ये सैने हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, नौजवान हैं, जितने भी सारे हैं, ये सारे 370 के ऊपर सारे खुश हैं। ये टूट गई, यहाँ तो ऐतिहासिक फैसला हो गया। हमारी आज़ादी तो समझो आज हुई जी। जम्मू वालों की आज़ादी आज ही हुई है। तो ये हम मोदी जी का और अमित शाह का, उनका ये शुक्रगुजार करते हैं। हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, तो ये हम उनके लिए दिल से, सारे जम्मू वाले और दिल से जी। तो अनिल, देख सकते हैं कि सबको ये लग रहा है कि जो एक ये ऐसा विभेदकारी 370 आर्टिकल जो था, उससे क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाता था, क्षेत्रीय संतुलन नहीं हो पाता था और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो बढ़त कश्मीर घाटी को मिली होती थी और अन्य क्षेत्रों की, लद्दाख और जम्मू रीजन की उपेक्षा होती थी, वो भी समाप्त होगा और लोग मुख्यधारा में तेजी से शामिल होकर देश के विकास की मुख्यधारा में शामिल होंगे। अनिल, Well, we also got Rama Chandra, who's joining us from Leh. Ramesh, there was the people of Leh, people of Ladakh wanted a union territory, and this demand was on for a very long time. Do you now feel with this decision taken by the government there, the people are very much happy that demands are finally being met and they look at it as a new dawn for them?
Yeah, yes, Anil, it is a historical decision for Ladakh as far as Ladakh is concerned. For the last 30 years, all Ladakhis are demanding with univoice for UT status with legislature for Ladakh. However, at present, they have got UT status for Ladakh without legislature, but people believe that the big hurdle is passed now, and legislature would be a small thing, and that would be fulfilled any time by the Modi government at center. Okay. And if I have to say, the celebrations, in fact, have started from the February last year, this year, February, when Modi has visited Leh. Okay. With the 5 promises that he has fulfilled: university, power grid, all such developmental activities. After his leaving for Delhi, Ladakh has got divisional status. It is step by step, Ladakh has started getting benefits from center and at governor's rule also. So now today people are waiting for Lok Sabha to pass the reservation bill, reorganization bill. Sorry. Okay, purely looking at it from the people there in Leh and Ladakh, what are the challenges ahead now that it becomes a union territory? What are the challenges ahead there for the administration and also for the people? Yeah, now the people are happy with now the administration is now slowly Ladakh is settling as division. Now it is a step further ahead for as a union territory. They have to establish administration and divisions, both including Leh and Kargil. So equally distributed offices and administrative setup and execution setup. These are the main immediate tasks for the administration that is right now. Okay, we'll leave it there. Thank you and appreciate you joining us. Stay with us. I'll just go to Ashwini, take a quick word from me. Ashwini, purely looking at the people of Jammu, now there is a belief of hope there. But what are the challenges there for the administration there in Jammu now, considering that it becomes a UT with legislative powers? हाँ, निश्चित तौर से अगर अनिल देखें तो विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की जो बात है उसमें साफ तरीके से ये है कि जो इन क्षेत्रों का समुचित विकास होगा, क्योंकि बिल्कुल घाटी, जम्मू और लद्दाख इन तीनों क्षेत्रों को अगर देखें तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और विधानसभा समेत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें कहीं ना कहीं एक जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो भी जम्मू और कश्मीर को लगभग बराबर मिल सकेगा। और साथ ही साथ जिसको जमहूरियत की बात करते हैं, जिसको क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिए जाने की बात होती है कि यानी पूर्णतया केंद्र पर निर्भरता न होना और साथ ही साथ अपना सीमित संदर्भों में जिस तरीके से दिल्ली और पांडिचेरी और अन्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं हैं उस तरीके से यहां पर इसका पुनर्गठन किया जाना निश्चित तौर से इस क्षेत्र के घाटी और जम्मू कश्मीर दोनों के विकास को और गति देगा। और जो भी स्वरूप होगा, जो भी स्वरूप बनने के बाद जो भी विधानसभा की जो संख्या और स्वरूप होगा वो भी बेहद निश्चित तौर से ये इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि लंबे समय से जम्मू के लोगों की अपेक्षा होती थी, जम्मू के लोगों की ये शिकायत भी होती थी कि जो विकास का या राजनीतिक बढ़त जो कश्मीर घाटी को मिली होती थी उस वास्ते कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का पूरा विकास नहीं होता था। तो अब वो भी इन लोगों की उम्मीद जगी है कि समन्वित और समुचित और बैलेंस जिसको कहते हैं वो ग्रोथ होगा और वो ग्रोथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस पूरे क्षेत्र की किस्मत को बदलेगा। आप जब अपने प्रतिनिधियों के रूप में विधानसभा भी होगी और केंद्र शासित प्रदेश भी होगा, इसको किस रूप में आप देख के चलते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा? ये महत्वपूर्ण इसलिए है, वहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। जब तक यहाँ पे नॉर्मलसी होती है, सारी चीज़ें स्थापित हो जाती हैं। अभी जो अनरेस्ट है कश्मीर के लेवल पे, कश्मीर के स्तर पे जो एक असंतोष है वो अभी जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मीडिया, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी कंट्रोल में हैं। अभी वो जैसे ही होता है तो उसके बाद उनको
उनको भी इसका जब पता लगेगा कि वाकई इसका बेहतरी क्या है, इसका फायदा क्या है, तो उसके बाद सरकार ने खुद कहा है कि इसको हम दोबारा करेंगे। और देख सकते हैं अनिल, साफ तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का वो बयान सदन में दिया जाना कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो राज्य को पुनः स्टेटहुड का फिर से दर्जा दिया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। और लोग उन सभी चीजों को ये समझ रहे हैं कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती है, अस्थायी तरीके से भले ही केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ ये होगा, लेकिन वो भी उम्मीद है कि जब पूर्ण राज्य के रूप में ये फिर से विकसित होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो विभेदकारी कानून भी खत्म हो रहा है और देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो क्षेत्र जो कि हमारा सिरमौर माना जाता है। Okay, we'll leave it there. Thank you and appreciate both of you. Ashwini for joining us from Jammu and also Ramesh from joining us from Leh with those updates there on that top story. Moving ahead, back in the national capital, at least 6 people have died and 10 others injured in a fire that broke out in a residential building in southeast Delhi late last night. The blaze in the 4-storied building in Zakir Nagar in southeast Delhi broke out at around 2 a.m. Most residents were fast asleep when the fire began in an electricity box. 8 fire engines were rushed to the spot and the fire has been doused. Among the injured are those who jumped off the building to save themselves. The injured have been taken to a nearby hospital. Around 7 cars and 8 motorcycles were also gutted in the fire. यहाँ पे ट्रीट किया है, सब कुछ किया है। पेशेंट जो सीरियस है उनको आईसीयू में एडमिट किया है, बाकी जो स्टेबल हैं उनको वार्ड में एडमिट किया हुआ है। जो इंजर्ड सीरियस हैं 5 उसमें से आईसीयू में है, बाकी वार्ड में एक पीडियाट्रिक आईसीयू में है। The Supreme Court is set to commence the day-to-day hearing from today to decide the Ayodhya land title dispute after the efforts to arrive at an amicable settlement through mediation having failed. A 5-judge constitution bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi will conduct the hearing. The Apex Court had on August 2nd taken note of the reports of the 3-member mediation panel headed by former Apex Court Judge FMI Khalifullah that the mediation process, which went on for about 4 months, having not resulted in any final settlement. The top court had on July 18th asked the mediation panel to inform the court about the outcome of their proceedings as on July 31st. In accordance with the Supreme Court order, the Unnao Rape survivor was shifted to AIIMS New Delhi on Monday from King George Medical University in Lucknow. The survivor was flown from Lucknow to New Delhi and a green corridor and free passage was provided to the ambulance in Lucknow and Delhi. Following the advice of doctors, a rapid movement of the ambulance carrying the Unnao Rape survivor was done in New Delhi through a green passage, which ensured that the distance between Delhi airport and AIIMS was covered in just 18 minutes. On to international stories. US President Donald Trump has denounced white supremacist extremism and racism and said mass murderers should be quickly executed in a strongly worded response to 2 gun massacres over the weekend. Trump said mental health laws should be reformed to better identify mentally disturbed individuals, and he called for capital punishment for those who commit mass murder and hate crimes. He said he had directed the Justice Department to work with local authorities and social media companies to detect mass shooters before they strike. Meanwhile, in Hong Kong, the unrest spread more widely throughout the financial hub on Monday as riot police clashed with pro-democracy protesters at multiple locations, and the city's leader warned of a very dangerous situation. The 3rd consecutive night of police protester confrontations occurred after a rare strike caused transport chaos. Activists disrupted vital rush hour commuter train service, held multiple rallies, besieged police stations and launched projectiles at the legislature, while the general strike affected dozens of flights at one of the world's busiest airports. Police fired tear gas in at least 11 areas across the city, battling to disperse crowds of demonstrators in the most widespread unrest seen during the past 2 months of increasingly violent protests. NATO chief Jens Stoltenberg has said that there was a real chance for peace in Afghanistan as the US-Taliban peace talks continue in Qatar. The NATO Secretary General was addressing a joint press conference in Wellington after a meet with New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. He said that NATO is closer to a peace deal than ever before, and it strongly supports all efforts to achieve a negotiated political solution. We now see a real chance for peace in Afghanistan.
we are closer to a peace deal than ever before, and NATO strongly supports all efforts to achieve a negotiated political solution. We will not stay longer in Afghanistan than necessary. It sounds like a movie sequence, but it happened in real life. A gang leader in Brazil attempted to break out of a Rio de Janeiro prison while dressed as his teenage daughter. Clovino da Silva dressed in his visiting daughter's clothing and donned a wig and silicone mask as he attempted to escape the Girciano prison. But guards became suspicious by his nervous and erratic behavior. His plan seemed to include leaving his 19-year-old daughter in the jail. Police are investigating her role as a possible accomplice. Rio State Secretary of Prison Administration released a video of Da Silva removing the costume after he was caught, plus a number of photographs detailing the mask and clothing. He has since been transferred to a maximum security prison and will face disciplinary measures. According to authorities, Da Silva is a leader within Red Command, one of Brazil's most powerful drug trafficking organizations. Well, after a look at these international stories, it's time to get my colleague Achal on board to get us the latest in the world of finance. Well, thank you very much, Anil. And today is Tuesday, the second trading day session, and we'll have a look at the news which is making headlines in the world of business. The Finance Ministry said banks have agreed to take steps to review lending rates as they have not transmitted to borrowers the benefits of reduction in the policy rate by RBI. RBI with policy rates are being cut by 75 basis points and policy outlook has been changed to accommodative. Finance Minister Nirmala Sitharaman met the heads of public sector banks as well as private lenders including HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank and Citibank. A range of issues connecting to credit growth, micro, small and medium enterprises, automobiles, timely transmission of rate cuts and digitization of service tax related issues were discussed at length. As a part of the meeting with various stakeholders in the economy, the Finance Minister will hold a meeting with MSME representatives today. Also, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government planned steps to improve the state of the economy fairly quickly after getting inputs from business leaders. The government has been meeting industry executives and will take steps to address the challenges facing the economy after a series of meetings this week. The government will also soon hold discussions with representatives of FPIs amid continuing overseas fund outflow from the markets following the decision to impose surcharge on certain class of such investors. And also in a move that is expected to further escalate trade tensions between the United States and China, Washington has officially designated Beijing as currency manipulator. The announcement by the U.S. Treasury follows a sharp fall in the value of the Chinese yuan against the dollar. It is said in a Chinese statement that China has long history of facilitated an undervalued currency through protracted large-scale intervention in the foreign exchange market. In recent days, China has taken concrete steps to devalue its currency while maintaining substantial foreign exchange reserves despite active use of such tools in the past. The context of these actions and implausibility of China's market stability rationale confirm that the purpose of China's currency devaluation is to gain an unfair competitive advantage in international trade. Treasury continues to urge China to enhance the transparency of China's exchange rate and reserve management operations and goals. The U.S. government said Treasury Secretary Stephen Mnuchin will now engage with the International Monetary Fund, that's IMF, to eliminate the unfair competitive advantage created by China's latest actions. U.S. President Donald Trump had earlier tweeted China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It's called currency manipulation. Are you listening, Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time. So trade tension continues between U.S. and China. And that's all we have in this edition of Finance World. Back to Anil for more news updates.
Well, thank you, Achal, for those updates from the world of business. It's time now to move to sports, where in sports, Australia do first blood in the Ashes with a thumping 251-run victory over England in the opening test match in Edgbaston on Monday evening. For the second time in the match, England's middle order fell cheaply with Joss Buttler, Ben Stokes, Johnny Bairstow and Moeen Ali failing to get to double figures. Local boy Chris Woakes top scored for England with a knock of 37 runs. Pat Cummins and Nathan Lyon, though kept taking regular wickets for their side. England had not lost a test match at the Birmingham Stronghold since 2008 and toasted victory in each of their previous 11 matches across all formats on that very venue in Birmingham. Well, India would be aiming to sweep the three-match T20 series against an inconsistent West Indies when the two teams lock horns against each other for the final game at the Providence Stadium in Guyana today. After the T20 series, India and West Indies will clash in a three-match ODI series, which will be followed by a two-match Test series. The series-pocketed India are likely to experiment with their lineup in pursuit of a whitewash when they take on an embattled West Indies in the third and final T20 International at Guyana on Tuesday. India concluded the two-match US leg of the series by taking an unassailable 2-0 lead after notching up a 22-run win in the second game on Sunday. Their performance wasn't the most fluent in the first match, but Virat Kohli and his men were back to being dominant in the second match, though the outcome was decided by the Duckworth-Lewis method after a thunderstorm and rain did not allow the game to continue. While the batting lineup may not change much, India may try a new bowling combination. There is a strong possibility that leg break bowler Rahul Chahar may make the cut in place of young paceman Navdeep Saini. For the hosts, putting up a coherent performance remains a challenge. Considered a force in the shortest format, they have not lived up to their reputation. The likes of Karen Pollard and skipper Carlos Brathwaite are due for big knocks. If they can manage to walk away with a win on Tuesday, it will be a confidence booster for the side ahead of the ODIs and tests. Sports Desk, TD News. Well, let's now take a look at the top stories published in the newspapers from the national capital. Our first look is at the top story on the scrapping of the Article 360 and J&K losing its special status across many newspapers. That's the headline. We're looking at the Hindu, the Times of India, the Hindus Times, all papers across there in the national capital, clearly talking about that as the top story. This is the Hindu. The J&K loses its special status, divided into two union territories. Home Minister Amit Shah announces the centre's decision in the Rajya Sabha. It's talking clearly about the new order that is in place. The resolution introducing two statutory resolutions to recommend that the President issue a notification rendering Article 370 inoperative and to accept Jammu and Kashmir Reorganization Bill. You look at the next paper, that's the Times of India. It's got an interesting headline. Kashmir is now Union's territory and India's North Pole now shifts to the center. What's happened, what it means, the idea bolstered by the Jagmohan book, and first time a state has become a union territory in the there have been earlier instances of a category state becoming a union territory, but this is the first time after the 1956 states reorganization that a full-fledged state is now becoming a union territory or has been relegated to a union territory or two union territories, to be very frank. Finally, a look at Hindustan Times. Territory of the union is what the headline says. No special status there. Article 35 removed, 370 effectively scrapped by presidential order. The Rajya Sabha Reorganization Bill passed to bifurcate the state into two union territories. Also, it talks about various things on why it happened. An article there on Imran Khan's US visit. A weak opposition sped up the 370 endgame for the government. Our next look is at the Economic Times and an interesting story on private forecasters smelling big bucks in Indian weather. Forecasting prowess is what it says. Government is hiring private forecasters to cater to three main sectors. That's agriculture, logistics and transport, because there's a need for more accurate predictions that unleashed a wider domain for global weather forecasting and services to grow at 1.2 billion in 2016 to 2.7 billion US dollars by 2023. That's according to a market study by Allied Market Research. Our final look is at a sports story that's from the Indian Express. It's an interesting one. It's about India naming a full-strength squad for not a regular tie. That's India is taking on virtually a full-strength side for that historic Davis Cup tie in Pakistan for the first time
in 55 years. 4 singles there. India's highest ranked Prajnesh Gunaveshwaran along with Ramkumar Ramanathan will spearhead India's singles challenge. Saket Mainini is injured. Saket Mainini has been included as Sumit Nagpal is injured. Rohan Bopanna and Digvij Sharan will be a doubles combination. At stake is that September 14th and 15th is a spot in that World Group playoffs next year. For that upcoming tie for Pakistan, the AITA has AITA has taken a drastic move of appointing a separate manager to accompany the team. The role has been given to Sundar Iyer, who's also the executive committee member of the association and secretary of the Maharashtra State Lawn Tennis Association, the body that organized the Pune Challenger and India's only ATP event. So clearly a manager being appointed separately for India's Davis Cup tie against Pakistan there in Pakistan. That's going to take place from September. That's going to take place in September on 14th and 15th. Well, moving ahead now to our good news story. A cycle bank in Barabanki village of Uttar Pradesh is helping young girls go to schools and continue their education. We bring you their inspiring story. The sound of cycle bells and young girls going to school together. The experience is special for these girls from Chandwara village in Barabanki and also their families. There was a time when the girls had to discontinue their education and drop out of school. There were many reasons: fear of harassment, poverty and lack of safer means to commute. When all seemed hopeless, the village Pradhan, Prakashini Jaiswal, came forward to help. She, along with some NGOs, started a unique initiative, a cycle bank. बच्चियों की पढ़ाई ज़्यादातर छूट रही थी क्योंकि बच्चियां 2 किलोमीटर दूर गांव से जाती थी पढ़ने, तो इससे उनकी पढ़ाई बिल्कुल रुक रही थी और कुछ घर से दिक्कत थी, जैसे पैसा नहीं था, तो इस तरह तो हमने कुछ लोगों से बात किया और जो समाज सेवी लोग थे उन्होंने हमको मदद की और हमने साइकिल बैंक खोला और साइकिल बच्चियों को बांटी. The cycle bank has come as a boon for the girls in the village. साइकिल मिलने से बहुत फ़ायदा है क्योंकि समय से स्कूल भी पहुंच जाते थे और ऐसे घर का थोड़ा काम भी हो जाता है और जल्दी कॉलेज भी चले जाते हैं. Thanks to the cycle bank, the girls can now travel to school safely and continue their education. A simple effort by the village Pradhan has transformed the lives of the girls in the village. Nitin Srivastava's report from Barabanki, DD News. Well, after that, it's now time to take a look at the weather in your city. Well, before we end the breakfast show, we leave you with a positive thought to kickstart your day. When life gets harder, challenge yourself to be stronger. Schools on Wheels at US-Mexico border is a great eye-opener in our Watch Out today on how to find ways to tackle adversity in your urge to learn and grow. Take a look, stay safe and healthy, enjoy the day ahead.